Welcome everyone. In this video lecture, I will show you how to write a C program to evaluate a polynomial fx is equal to 0 at given value of x using function. In my last video lecture, I have shown you how to write simple C program using main function to evaluate a polynomial. But in this video lecture, we will see how to use a function uh, for evaluation of a polynomial. And this function is not any inbuilt function. This is designed after main function. Okay, so let's start. So first of all, we declare our header file. So header file declaration is hash include stdio.h. So we write here hash include stdio.h. Okay, then we declare the prototype is the function. जो function हम use करेंगे तो वो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे बिफोर मेन फंक्शन. तो हम यहाँ 2 लाइनें छोड़ देते हैं उसके लिए. We'll do that okay after writing the main function. Let's write the main function first of all. Int main. Okay, inside the main we first of all ask the coefficients of the polynomial and the value of x. हम ये दो काम मेन में करेंगे. तो polynomial सेव करने के लिए हम coefficients यूजर से पूछेंगे उसके. तो we need to declare here variables. First of all, we need an array to save the coefficients of the polynomial, and we also need the degree. Okay, and we need one variable I to save the coefficients, and the value of x may be in decimal also, so we keep the type of x as float. Okay, and now we print the message on the screen. हम ये पहले प्रिंट कराएंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. एंटर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो डिग्री से हम फॉर लूप कितनी बार चलाना है ये हमें आइडिया लग जाएगा. ओके, तो डिग्री को हम स्कैन कर लेते हैं यूजिंग scanf कमांड. और क्योंकि डिग्री का टाइप इंटीजर है सो वी यूज %d हियर, और डिग्री हम एंड में सेव करेंगे. सो जस्ट सेव द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, सॉरी polynomial. Okay, after saving the degree we ask the user the value of x जिस पर हमें polynomial को evaluate करना है. Enter the value of x. Okay, we save this variable inside x. Okay, sorry, we use %f here because the type of the variable x is float, so we use %f here ampersand x. Okay, now we use for loop. फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0. हमें कोफिशिएंट x की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए n तक जाना है. i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस. इनसाइड दिस फॉर लूप हम ये मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एंटर द coefficients of x raised to the power %d. And what is %d here? I. तो स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ आएगा एंटर द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0. ओके, x रेज टू द पावर 1, x रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन. तो जैसे ही ये मैसेज आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे आप
कोफिशिएंट एंटर करेंगे तो हमें सेव करना है उन्हें, सो वी यूज scanf कमांड आफ्टर दिस printf %d। और यहाँ पर हम उन कोफिशिएंट्स को कहाँ सेव करेंगे, एरे में। तो एरे में हम यहाँ पर ए आई यूज करेंगे, %ai। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको हमने ए आई क्यों लिखा है, क्योंकि whenever I is 0, the coefficient of x raised to the power 0 is saved at the position a0। तो a0 पोजीशन क्या है हमारे पास, ये एरे है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री सपोज 5 है, तो ये जो इंडेक्स है दैट डिनोट्स द पावर ऑफ x। ओके, सो यू फर्स्ट आस्क द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0। हम रिवर्स ऑर्डर में पॉलिनोमियल एंटर करा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यू एंटर करा रहे हैं, उसके बाद हम x रेज टू द पावर 1 का कोफिशिएंट एंटर करेंगे, देन x रेज टू द पावर 2 का। तो ये पोजीशन है a0, दिस पोजीशन इज a1। तो यहाँ पर अगर आपका पॉलिनोमियल है सपोज 2x5 प्लस 3x4 प्लस x³ प्लस 2x square plus 1, then you will enter 1 first of all, that will be saved at the position a0 according to this command. Then you will enter the coefficient of x raised to the power 1, then x I have missed that. Let's say this is suppose we have 3x plus 1, okay, then we enter 3, so 3 will be saved at a1 position, okay, and so on. Now we close this bracket here because the role of for loop is finished here। यहाँ पर for loop का रोल खत्म हो जाता है। This is all for saving the polynomial coefficients in the array A, okay। अब एरे में आपके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट सेव हो गए, x की वैल्यू हमारे पास है और डिग्री भी है। अब हम अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है पॉली वैल्यू। ओके, उसको हम क्या पास करेंगे, हम उसको एरे पास करेंगे, हम उसको x पास करेंगे और डिग्री पास करेंगे। तो 3 चीजें हम पास करेंगे। It will return us the value, so you can receive it in some variable and print it in the main function, or you can print the value of the polynomial in this function itself। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने केवल इस फंक्शन को कॉल किया है, बाकी सारे काम मैंने इस फंक्शन के अंदर ही करे हैं प्रिंट कराने के। तो now I will close this main function by writing return 0, and I have closed this main program, okay। Now I'll make this function after main function। अब हम इस function को बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर int poly value function डिक्लेयर कर रही हूँ, और क्योंकि यहाँ पर axn का टाइप डिफाइंड है लेकिन आउटसाइड द मेन फंक्शन इनका टाइप डिफाइंड नहीं है, तो हमें इनका टाइप फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, इंट x, इंट हर वेरिएबल का अलग अलग। ओके, आपको x का टाइप अलग बताना पड़ेगा, n का टाइप और इस एरे का टाइप। अब क्योंकि x फ्लोट लिया है मैंने, तो यहाँ पर आप फ्लोट लिख सकते हो, यहाँ पर n की जगह आप फ्लोट लिख सकते हो। ओके, उसके बाद अब आपको पॉलिनोमियल इवैल्यूएट करने का मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे बनाना है आपको।
तो आपको यहाँ पर फॉर लूप यूज करना है। तो फॉर लूप में आप कोई इंडेक्स यूज करेंगे, कोई वेरिएबल यूज करेंगे, तो वो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे पहले। तो लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल आई हियर। और क्योंकि मुझे वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ सम, जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू इवेल्युएट करूंगी मैं। तो मैंने सम एक और वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने ए जीरोथ पोजीशन का जो वैल्यू है वो सम में एंटर करा दिया है। ए जीरोथ पोजीशन पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू मैंने सेव कर ली है सम में। ओके, उसके बाद आई विल स्टार्ट फॉर लूप। मैं फॉर लूप स्टार्ट करूंगी। आई इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सेव कर लिया है और मुझे अगर पॉलिनोमियल इवेल्युएट करना है तो वन प्लस समथिंग ही करूंगी मैं। ओके, तो इसलिए मैं वन से स्टार्ट करूंगी। ये कांस्टेंट ऐड हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी आई इज इक्वल टू वन से, एंड आई विल गो फॉर आई लेस देन और इक्वल टू एन। मैं डिग्री तक जाऊंगी एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज सम इज इक्वल टू सम। इसमें इस वेरिएबल में पॉलिनोमियल की वैल्यू सेव हो रही है। तो वन में हमें क्या ऐड करना है, अब ये पावर, ये जो इंडेक्स है दैट इज द पावर ऑफ एक्स, एंड दिस नंबर इज गेट मल्टीप्लाइड विद द पावर ऑफ एक्स। ओके, यही तो करना है आपको। थ्री का मल्टीप्लाई आपको किस एक्स की पावर वन से करना है। ओके, तो प्लस और उसको ऐड कर देना है पुराने सम में। तो सम प्लस, अब थ्री, थ्री का मतलब ए आईएथ पोजीशन, ए आईएथ पोजीशन का मतलब कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पर ए आई का मल्टीप्लाई करूंगी, किससे करूंगी, किससे करना है ए आई का मल्टीप्लाई, एक्स की पावर आई से। ठीक है, एक्स, तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊंगी पावर, जिसमें कैलकुलेट करूंगी मैं एक्स की पावर आई। इसको दो वेरिएबल में कॉल पास कर रही हूँ, एक फंक्शन बनाया है मैंने पावर, जिसको मैंने दो वेरिएबल पास करे हैं एक्स और आई। ये मुझे कैलकुलेट करके देगा एक्स की पावर आई। इस फंक्शन का काम है एक्स रेस टू द पावर आई कैलकुलेट करना। एक्स रेस टू द पावर आई का मतलब एक्स का मल्टीप्लाई कितनी बार, आई, आई टाइम्स। ओके, तो ये मैंने कॉल किया है, ये मैं अभी भी बनाऊंगी फंक्शन। तो यहाँ पर एक तरह से हम दो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एक पॉलीवेल फंक्शन है और दूसरा पावर फंक्शन है। ओके, आफ्टर completion of this for loop the value will be saved in sum, so we can print this value inside this function itself, or we can return this value and print this value inside the main function। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहीं प्रिंट करा लिया है, value of polynomial at %d is %d. What is first %d? First %d indicates your x, and second %d indicates value which is stored in sum. Okay. Now we write here return 0, and we can close this function. यहाँ पर हमने इसको close कर दिया. Okay. Now we write another function after this function, which is called power. तो क्योंकि power x की पावर, जैसे x फ्लोट है तो उसकी पावर भी डेसिमल में हो सकती है, तो हम इसका जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोट रखेंगे, फ्लोट, एंड वी राइट हियर पावर, और वी डिक्लेयर हियर टू वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स, int y and int m. You can take the same variables int x and int n,
जैसा हमने वहां लिखा था वैसे ही यहाँ लिख सकते हो x एंड n, और डिफरेंट भी ले सकते हो। नाउ भी हमें क्या करना है, हमें y की पावर m कैलकुलेट करनी है। तो हमें एक तरह से y को y का मल्टीप्लाई y में करना है m टाइम्स, यही तो करना है। अगर 2 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है आपको तो क्या करोगे, 2 इंटू टू इंटू टू, टू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो मुझे y की पावर m कैलकुलेट करनी है, तो मतलब मुझे y का मल्टीप्लाई y में करते जाना है कितनी बार, m बार, यही तो करना है। तो जब भी हमें अब y को m बार मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप का यूज करेंगे तो हमें कोई वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, तो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। सो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल j, और जो वैल्यू आएगी पावर की वो हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो दैट वेरिएबल इज सपोज वैल्यू। अब क्योंकि वैल्यू भी डेसिमल में हो सकती है तो इसका टाइप हम इंट नहीं ले सकते, इसका टाइप हम फ्लोट रखेंगे। तो यहाँ पर हम सेमी कोलन लगा देते हैं और एक और हम वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करते हैं फ्लोट, और यहाँ लिखते हैं वैल्यू। ओके, नाउ वी आर रेडी टू राइट अ फॉर लूप फॉर j is equal to 1, j लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, m तक, j प्लस प्लस। ओके, क्या करेंगे इसमें, अब ये वैल्यू हम इसको 1 दे देते हैं वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय y, यही तो करना है हमें। और ये कितनी बार होगा, ये m टाइम्स हो जाएगा, j इज इक्वल टू 1, 1 टाइम्स में क्या होगा 1 इंटू वाई, फिर 2 होगी जब j की वैल्यू, तो देन y इंटू वाई, इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा m टाइम्स। After completion of this for loop, value is saved in y raised to the power m is saved in value. So we return this, return value, इसको return कर देंगे। Return value, ये return हो गया, and close the bracket. This is done. So we have made two function. One is poly value, and inside the poly value we have called another function which is power, which is outside this poly value. So एक तरह से we have made three function. One is main function, another is poly value function, and the third one is power function. मेन फंक्शन के अंदर हमने पॉली वैल्यू फंक्शन को कॉल किया है, एंड पॉली वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने पावर फंक्शन को कॉल किया है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू रन दिस प्रोग्राम। और रन कराने से पहले वी हैव लेफ्ट टू लाइंस हियर फॉर द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शंस बनाए हैं आफ्टर मेन फंक्शन, तो हम उनका डिक्लेरेशन यहाँ करेंगे बिफोर मेन फंक्शन। सो वी राइट हियर इंट poly value and we write all the variables with their uh, types, one array and a variable x and n. Another is power function whose return type is float. Int y, int m, and this y may be float also. Yes, यहाँ पर हमने float लिया है। यहाँ पर हमने जो x का वेरिएबल टाइप लिया है, x का वो फ्लोट लिया था। तो यहाँ पर आप इंट की बजाय फ्लोट लिख सकते हो, यहाँ फ्लोट कर दीजिए। ओके, तो
यहाँ पर भी हम फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट y कॉमा इंट m। ओके, so let's see how to run this program. This is written as I have told you. This is prototype declaration. यहाँ पर आप float y कर सकते हो. This is float y int m. यहाँ पर भी हम float लिख सकते हैं. And this is a power function. So we can change the variable type here, float y int m. Okay, and the value may be in decimal, so you can change the type of the variable here, variable value. इसका type हम float रख सकते हैं. Okay, so let's run this program. So we have obtained some error inside this. In third line, we have previous declaration of poly value was here. Int yes, यहाँ पर int declare हुआ है, ये correction करना है line number 3 में. This यहाँ पर आप float कर दीजिए. Float x int n. Okay. Press it again. Sum is parameter sum is initialized, a is undeclared. Line number 20. A is declared here. Yes, I have missed the bracket here after float function. Run it again. So I have obtained some more errors. Error A is undeclared. A is undeclared here. Okay, after this function, I have also missed one bracket here. Okay. Now it's work. %d expects argument of the type int, but
प्रिंट है वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पर्सन, यस इधर यहाँ पर आप क्योंकि x का टाइप पर्सन इट इज अ फ्लोट टाइप, सो I should use here person f. Okay, so let's stop and let's make correction here, person f. So it should be person f, and the value of the polynomial is also in float. Okay, so it's the type of sum should also be float. Okay, and I should change person f here. X comma sum. Okay, now let's run it. So let's enter the degree of polynomial. So let's enter 2. My polynomial is 2x square plus 3x plus 2. So I have entered the degree as 2. And the value of x, suppose let's say 2. Enter the coefficient of x raised to the power 0. So it's 2. Then 3. Then 2. The value of polynomial at 2 is 16. Okay, it's correct. You can check it. Run it again. Let's enter the degree as 3. Let me tell you, the polynomial is 3x cubed plus 4x minus 1. And I'm going to evaluate it at minus 1. So value of x is minus 1. Enter the coefficient of x raised to the power 0, which is minus 1. 4, 0, 3. It's minus 8. It's absolutely correct. So I hope you understand how to write the program of evaluating a polynomial using function. So you can use any number of functions and you can call them inside the main function. यहाँ पर हमने polyvalue function डिजाइन किया है जिसमें हमने polynomial को evaluate किया है at the given value of x, and that value of x and the degree and the polynomial, these all three arguments are passed by main function to this function. Okay, इस फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन यूज किया है which is power, which calculates x raised to the power I, which is designed after this function. So you can do some more programs based on this concept, and you can learn and enjoy. Thank you for watching the video. If you like this video, you can press the like button and share it, and you can subscribe my channel to get the notification of any new video. Thank you so much.